morning to my dear students. Welcome back to Atma Green School, Jai Swami Narayan. Today I start with class 9th. We will continue book Democratic Politics, lesson 6, that is Democratic Rights. And in my previous class we had completed with the rights in Indian Constitution ka sabse pehla, that is right to equality. हाँ ओके एंड फ्रॉम पेज नंबर 103 तक मैंने आपको एक्सप्लेन किया था मेनी फॉर्म्स ऑफ अनटचेबिलिटी एंड आई हैड टोल्ड यू टू रीड दिस राइट टू फ्रीडम राइट सो वी विल कंटिन्यू फ्रॉम राइट टू फ्रीडम सी फर्स्ट आई विल रीड देन आई विल एक्सप्लेन दिस फ्रीडम मीन्स absence of constraints in practical life. In practical life, it means absence of interference in our affairs by others, be it other individuals or the government. We want to live in society, but we want to be free. We want to do the things in the way we want to do them. Others should not dictate us what we should do. So under the Indian Constitution, all citizens have the right to freedom of speech and expression, assembly in a peaceful manner, form associations and unions, move freely throughout the country, reside in any part of the country, practice any profession or to carry on any occupation, trade or business. You should remember that every citizen has the right to all these freedoms. That means you cannot exercise your freedom in such a manner that violates others' right to freedom. Your freedom should not cause public nuisance or disorder. You are free to do everything which injures no one else. Freedom is not unlimited license to do what one wants. Accordingly, the government can impose certain reasonable restrictions on our freedoms in the larger interest of the society. Okay, so let me explain this part, that is right to freedom. Freedom means absence of constraint. Constraint का मतलब है restrictions. Okay, the meaning of constraint is restrictions. In practical life, it means absence of interference in our affairs by others, by other individuals or the government. And under the Indian Constitution, all citizens have the right, first, the freedom to speech and expression, assembly in a peaceful manner, form associations, unions and cooperative societies, move freely throughout the country, reside in any part of the country, practice any profession or to carry on any occupation, trade or business. Nobody can exercise freedom in such a manner that violates others' rights to freedom. The government can impose certain reasonable restrictions on our freedom in the larger interest of the society. Okay, so that was right to freedom. Now again page number 103, we go to its subtopic, that is freedom of speech and expression. Freedom of speech and expression is one of the essential features of any democracy. Our ideas and personality develop only when we are able to freely communicate with others. You may think differently from others. Even if 100 people think in one way, you should have the people to think differently. अब हमें freedom मिला है तो ये नहीं हम एक दूसरे की copy करें, okay? मतलब कि वो ये कर रहा है तो मैं भी फिर से ये करूँ, okay? That is you have the freedom to think yourself. जरूरी नहीं कि सामने वाला जो कर रहा है आप भी वही करो, okay? Even if 100 people अगर एक सोच में है तो 101 आप बनो, different सोच, है ना? Something unique, and express your views accordingly. You may disagree with the policy of government or activities of an association. You are free to criticize the government or the activities of the association in your conversations with parents, friends and relatives. You may publicize your views through a pamphlet. आप अपने views, अपनी सोच, अपना thinking way, you know, किसी ना किसी जरिए
से आप लोगों तक पहुंचा सकते हो, पैम्फलेट के थ्रू, या तो फिर जैसे आप अपने नेबरहुड को एक यूनिक करके आप उनको बोल सकते हो अबाउट योर व्यूज. ओके, okay, that is you are free to criticize the government or the activities of the association in your conversations with the parents, friends and relatives. जैसे कई लोग कई है जो क्रिटिसाइज कुछ बोलना चाहते हैं, तो आप मतलब कि आप रोड में बीच में खड़े होके और ये सब नहीं कर सकते हो, राइट. यू वांट टू क्रिटिसाइज, किसी को भी आपको करना है तो आप विद इन पेरेंट्स, अपने यहाँ पे ओके, दैट इज फ्रेंड्स रिलेटिव्स के बीच में आप ये कर सकते हो. पब्लिकली आप नहीं कर सकते हो. यू मे पब्लिसाइज योर व्यूज थ्रू अ पैम्पलेट, मैगजीन और न्यूज पेपर्स. यू कैन डू इट थ्रू पेंटिंग्स के जरिए आप बता सकते हो, पोइट्री और सॉन्ग्स दोनों पे. ओके, राइट, through paintings, poetry or songs. And however, you cannot use this freedom to instigate violence against others. आप अगर ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, सो ये लिबर्टी सिर्फ विद इन योर प्रेमाइसेस है. ओके, आपको क्रिटिसाइज करना है, आपको कुछ भी करना है, आप विद इन द प्रेमाइसेस करोगे. ओके, आप रोड में खड़े होके चिल्ला कर क्रिटिसाइज नहीं कर सकते हो किसी के भी खिलाफ. दैट इज ऑल अगेंस्ट द लॉ. Okay, then violence नहीं कर सकते हो. You cannot use it to incite people to rebel against government. वॉशिंग मशीन के ऊपर मना किया था ना. और आप मतलब कि you can't rebel, आप किसी को गवर्नमेंट के खिलाफ रेबल नहीं करवा सकते हो. ओके, आप भड़का नहीं सकते हो, आप राइट्स नहीं क्रिएट कर सकते हो. कई लोग करते हैं जो. Neither can you use it to defame others by saying false and mean things that cause damage to a person's reputation. आप किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते हो, किसी के बारे में फॉल्स नहीं बोल सकते हो, मीन थिंग्स, या किसी भी पर्सन की सेल्फ रिस्पेक्ट को आप ठेस नहीं पहुंचा सकते हो. दीज आर ऑल एक्चुअली रॉन्ग. ये सब लॉ, अगर ऐसा करोगे तो डेफिनेटली यू विल बी पुट बिहाइंड द बार्स. Okay, so that is citizens have the on the views are expressed through pamphlets, magazines, newspapers, painting, poetry or songs. However, this freedom cannot be used to stimulate violence against others and excite people to rebel against government. It is also cannot be used to defame others by saying false and mean things that cause damage to person's reputation. Okay, freedom of speech and expression का मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी करोगे. जो करना है, you should be do under the law. लॉ को तोड़ के आपको बाहर नहीं जाना है. Then the next is citizens have the freedom to hold meetings, processions, rallies and demonstrations on any issues. They may want to discuss a problem, exchange ideas, mobilize public support to a cause, or seek votes for a candidate or party in an election. But such meetings have to be peaceful. They should not lead to public disorder or breach of peace in society. Those who participate in these activities and meetings should not carry weapons with them. आप अगर रैली निकाल रहे हो तो कोई भी इंस्ट्रूमेंट, वेपन्स नहीं होना चाहिए आपके हाथ में. Okay, citizens also can form associations. For example, workers in a factory can form a workers union to promote their interest. मतलब आगे एक कोई लीडर होना चाहिए जो लीड कर रहा हो आपकी इस प्रोसेशन को या प्रमोट कर रहा हो. सम पीपल इन अ टाउन में कम टुगेदर टू फॉर्म एन एसोसिएशन टू कैंपेन अगेंस्ट करप्शन या पॉल्यूशन के. तो आसपास के भी लोग आके आपके कैंपेन में इसमें ज्वाइन हो सकते हैं. एज सिटीजन्स वी हैव द फ्रीडम टू ट्रैवल टू एनी पार्ट ऑफ द कंट्री. ओके, ये बाद में है, ट्रैवलिंग वाला पार्ट है. फर्स्ट, सिटीजन्स हैव अ फ्रीडम टू होल्ड मीटिंग्स, प्रोसेशंस, रैलीज एंड डेमोन्स्ट्रेशंस ऑन एनी इशू. बट सच meetings should be peaceful and people participating in these should not carry weapons. Citizens also can form associations to promote their interest. The next is freedom to travel, choice of occupations. We are free to reside and settle in any party, in any part of the territory of India. Let us say a person who belongs to the state of Assam wants to start a business in Hyderabad. He may not have any connection with that city.
He may not have ever seen it ever. Yes, yet as a citizen of India, he has a right to set up base there. आप ना वो शहर को पहचानते हो, ना शहर में किसी इंसान को पहचानते हो, सब कुछ अपने न्यू, फिर भी एक इंसान उस शहर में, उस न्यू जगह में ओके एक स्ट्रेंजर बन के अपना बेस सेटअप कर सकता है, अपनी शॉप सेटअप कर सकता है, अपना बिजनेस सेटअप कर सकता है. फ्रीडम. He may not have any connection with the city, he may not have even seen it ever, yet as a citizen of India, he has a right to set up base there. This right allows lakhs of people to migrate from villages to towns and from poorest regions to prosperous regions and big cities. The same freedom extends to choice. जैसे देखो फॉर एग्जाम्पल गांव में एक इंसान का बहुत पैसा है, लेकिन गांव में वो ऐसा कुछ नहीं कर सकते जो फ्लोरिश हो सके, क्योंकि पढ़े लिखे लोग विलेज में नहीं आएंगे, विलेज के लोगों को टाउन जाना पड़ता है, रिवर्स नहीं होता है. सो फॉर दैट अगर एक बंदे के पास बहुत पैसा है, वो कुछ करना चाहता है, तो उसे अपना विलेज छोड़कर टाउन में सेटल होना पड़ेगा, वहां भी कुछ करना पड़ेगा, तभी वो फ्लरिश होगा. द सेम फ्रीडम एक्सटेंड्स टू चॉइस ऑफ ऑक्यूपेशन भी. आप कोई भी आज आप एग्रीकल्चर में हो, कल आप किसी इंडस्ट्री में भी लग सकते हो, परसों आप कुछ और कर सकते हो. एनी ऑक्यूपेशन यू कैन सिलेक्ट ऑफ योर ओन. No one can force you to do कि ये नहीं करना, आपको ये नहीं करना है. Women cannot be told that some kinds of occupations are not. Actually ये गलत है जो बोल रहे हैं. Women के लिए कुछ भी impossible नहीं है. अगर करना चाहे तो हम आदमी के जितना काम कर सकते हैं. जो men कर सकते हैं, कहा जाता है women नहीं कर सकती है, कर सकते हैं. शायद एक 7th स्टैंडर्ड की बुक में था कि एक दलित लड़की, दलित गर्ल, she had become a driver of train की ड्राइवर बनी है वो दलित गर्ल. नथिंग इज इम्पॉसिबल. अभी तो चांद पे जा चुके हैं, प्लेन्स भी चलाती हैं गर्ल्स, फाइटर प्लेन्स भी चलाती विमेन. सो नथिंग इज इम्पॉसिबल. Women cannot be told that some kinds of occupations are not for them. People from deprived caste cannot be kept to their traditional occupations. ये नहीं कि जो लो है वो बेटा ओके दैट इज आपका जो ऑक्यूपेशन है, आप ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन पे स्टिक जरूरी नहीं है, आप आगे आ सकते हो. द कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट नो पर्सन कैन बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर established by law. It means that no person can be killed unless the court has ordered a death sentence. ये तो आपको पता ही है कि पुलिस भी अगर किसी क्रिमिनल को पकड़ती है तो पुलिस doesn't have any right. वो तो ये भी नहीं कह सकती कि ये बंदा कल्प्रिट है, बस किसी पे शक के बुनियाद पे उसे जेल में डाल सकते हैं, राइट? Just read this page number 104. Just read this. Give me 2 minutes. Just read this. That is page 104. The Constitution says that no person can be deprived of his life or personal liberty except according to procedure established by law. It means that no person can be killed unless the court has ordered a death sentence. सुप्रीम कोर्ट जब तक कोई अहम सजा नहीं सुनाता है तब तक कहीं भी फैसला नहीं होगा सिवाय सुप्रीम कोर्ट के. Whether the person is to be hanged or imprisoned, life imprisonment या जो भी है. It also means that a government or police officer can arrest or detain any citizen unless he has a proper legal justification. कोई पुलिस भी अगर शक के बुनियाद पे भी किसी को अरेस्ट करने आती तो उनके पास कुछ प्रूफ होना चाहिए,
कुछ लीगल डॉक्यूमेंट होना चाहिए. Then the police शक के बुनियाद में the police can put he or she behind the bars, लेकिन वो ये नहीं तय कर सकते कि ये बंदा गुनहगार है. वो जो भी लीगल प्रोसीजर्स होंगे वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट उसका फैसला करेगी. Okay, that is even when they do, they have to follow some procedures. A person who is arrested and detained, जिसे bars के पीछे रखा गया, will have to be informed for the reasons for such arrest and detention. मतलब जो बंदा अगर आया है तो उससे बताना पड़ेगा कि हम कहाँ से आए हैं, हमें मतलब कि क्या प्रूफ मिला है, हमें किस शक के बुनियाद पे आपको गिरफ्तार कर रहे हैं. A person who is arrested and detained shall be produced before the nearest magistrate within a period of 24 hours of arrest. Such a person has a right to consult a lawyer. फिर अपना लॉ आप कर सकते हो. Such a person has a right to consult a lawyer or engage a lawyer for his defense. Page number 105. Let us recall the cases of Guantanamo Bay and Kosovo. The victims in both these cases faced a threat to the most basic of all liberties, the protection of individual life and personal liberty. What is personal liberty actually? Personal liberty, the Constitution says that no person can be deprived of his life or personal liberty except according to procedure established by law. It means that no person can be killed unless the court has ordered a death sentence. It also means that a government or police officer cannot arrest or detain any citizen unless he has proper legal jurisdiction. A person who is arrested and detained in custody will have to be informed of the reasons for such arrest and detention. Such a person shall be produced before the nearest magistrate within a period of 24 hours of arrest. Such a person has the right to consult a lawyer or engage a lawyer for his own defense. Okay, come on, we go to page number 105, वो green वाला box. Are these cases instances, यानी examples of violation of right to freedom? If yes, which constitutional provision does each of this violate? The government of India banned Salman Rushdie's book Satanic Verses on the ground that it was disrespectful to Prophet Muhammad and was likely to hurt the feelings of Muslim community. Every film has to be approved by the censor board of the government before it can be shown to the public. वो तो common है, आपको पता है. But there is no such restriction if the same story is published in a book or a magazine. Ma'am, I have sent it on the WhatsApp. Okay, the government, the government is considering a proposal that there will be industrial zones or sectors of economy where workers will not be allowed to form unions or go on strike. City administration has imposed a ban on the use of public microphones after 10 p.m. in the view of the approaching secondary school examinations. Okay. So that was the next topic is right against exploitation. So students, please read this.
Okay, read this. आप ये पढ़ो 105 and I will continue in my next class, that is rights against exploitation. So please do read this. क्या लिखा है ये? You. Once there was a topic on electrical in chapter. I couldn't quite hear what he said, and I hope it doesn't matter because one. And please do read the whole lesson. और ये भी आप पढ़ो, right against exploitation. So I will share in my next class. और मैं ये कंटिन्यू करूँगी in my next class. बहुत easy lesson है, that is जो हमारे डेली डेमोक्रेसी में होता आ रहा है, या फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज दैट यू हैव स्टडीड इन योर लोअर क्लासेस. And all the vegetables spoil, the rain and still as water. Okay, students. Okay, so I will continue in my next class. So with this, I wrap up my class here. Thank you to all, and please do read the text. जहाँ तक मैंने आपको पढ़ाया है वहाँ तक आप रीडिंग करो.